Hello kids, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. Welcome to High Speed Education. आज हम क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 5 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड स्टार्ट करेंगे। ये पोएम फीब कैरी ने लिखी है। ये पोएम का टाइप बैलेड है। अब लाइंस होती है। इंट्रोडक्शन में बस यही है। Now, summary. The poem is a legend about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. The story goes on like this. One day, Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived. She was making cakes and baking them on a hearth. Saint Peter was fainting with hunger. He asked the lady to give him a piece of cake. The cake that she was baking was appeared to be too big, so she did not give him that, and instead she baked another smaller one. That also appeared to be big, so she did not give him that also. The second time she baked yet another smaller cake, but found it too big to give away. In the third attempt, she took an extremely little scrap of dough and rolled it flat. She had it as thin as wafer, but was unable to part with that also. This angered Saint Peter a lot. He said that she was not fit to live in human form and enjoy food and warmth. He cursed her and transformed her into a woodpecker bird who had to bore in dry wood to get its scanty food. She can be seen in all the trees all day boring and boring for her food. ये पोएम सेंट पीटर एंड एक ओल्ड लेडी की है। अब सेंट पीटर पूरी दुनिया में घूमते रहते थे। अब एक दिन वो एक ये ओल्ड लेडी के घर पे आ गए। वो केक बना रही थी। सेंट पीटर भूख के मारे चक्कर खा रहे थे। उन्होंने लेडी से एक छोटा सा टुकड़ा मांगा केक का, बट उन्होंने बहुत बड़ा केक बनाया था, तो वो एक सेंट को इतना बड़ा केक नहीं दे सकती थी, तो उन्होंने दूसरा केक बनाया, बट वो भी उनको बड़ा लगा, तो फिर उन्होंने तीसरा केक बनाया, और इस बार काफी छोटा सा केक था, इसलिए सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ये इंसान बन के एंजॉय करने के लायक नहीं है, और उन्होंने ओल्ड लेडी को श्राप दिया और उनको एक वुड पेकर बर्ड बना दिया, जिसको थोड़े से खाने के लिए बहुत ज्यादा पैक करना पड़ता है वुड में। अब वो पूरा दिन ट्रीज को बोर करते हुए देखी जाती है। नाउ अब हम स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे। स्टैंजा Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winters that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in the funny furry clothes. अब स्टैंजा 1 and 2 की explanation देखते हैं. In the region around the North Pole, the duration of the day is very less because its position is such that sun's rays reach for a few very less time. When this area experiences winter season, the duration of night is very long and the daytime hours are very less. In line 4, that refers to the people who live in this region. The poet says that duration of the night time is so long that the people cannot seem to sleep them through. If they go to bed, take a few hours of sleep and then wake up, it is still night time. He wants to emphasize on the fact that the duration of night is very long. अब इस टेंस में ये कहते हैं पोएट कि नॉर्थ पोल में डे टाइम बहुत छोटा सा होता है एंड नाइट टाइम बहुत लंबा होता है बिकॉज सन रेज पोल पे कम पहुंचती है। तो अगर इन केस लोग रात को सो भी गए और वो उठते हैं तब भी रात टाइम ही होता है। नाउ स्टैंजा 2. The Northland region experiences severe cold condition. It is a snowy area. The reindeer is an animal which is found in this polar region. People tie the reindeers to the sledges and then the reindeers pull the sledges. He adds that the children look like a young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur, which is like a funny skin of bear. अब नॉर्थलैंड के लोग बहुत ज्यादा ठंडी एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज वो स्नोई एरिया है। अब रेनडियर एक एनिमल है जो पोलर रीजन में मिलता है, तो लोग स्लेजिस मतलब जो हल होता है वो रेनडियर पे बांध देते हैं एंड वो रेनडियर स्लेजिस को पुल करते हैं। दैट्स वाई वो स्नो हट जाता है उधर से, और वो ऐसा कहते हैं कि वहाँ के बच्चे बेयर के कब्स के मतलब बेयर के बच्चे जैसे दिखते हैं बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा फनी और फरी क्लोथ्स पहनते हैं। वो तो ऑब्वियस है बिकॉज कोल्ड रीजन में हमें फर वाले क्लोथ्स ही पहनने पड़ते हैं। Now, they tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when a good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Up stanza 3 कहता है, in line 1, they refers to the parents or elders, and them refers to the children or the younger generation. The elders of the Northland region tells a strange and interesting story to the younger generation. The poet says that he doesn't think that this story is true, but if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it. The story gives an important message. अब
जो फर्स्ट लाइन में दे है वो पेरेंट्स एंड एल्डर्स है, एंड धम है वो बच्चे हैं। तो इसमें एल्डर, नॉर्थलैंड के एल्डर्स वहां की यंगर जनरेशन को एक स्टोरी कह रहा है। पोएट कहते हैं कि उनको नहीं लगता ये स्टोरी सच है, बट वो कहते हैं कि अगर ये स्टोरी रीडर पढ़े तो शायद वो मोरल निकाल पाए इससे और कुछ सीख पाए। Now stanza 4. The story is about Saint Peter. When Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people, just like all saints do, then an incident happened. इस स्टोरी में सेंट पीटर है, वो पूरे वर्ल्ड में घूमते घूमते रिलीजियस लेक्चर्स देते थे लोगों को, जैसे हर सेंट देते हैं, बट वहां पे एक इंसिडेंट हुआ। He came to the door of a cottage. In traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them, and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. Now stanza 5. When Saint Peter was moving around the world giving religious lectures to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. अब सेंट पीटर पूरी दुनिया में घूम रहे थे लेक्चर्स देते हुए, तब वो एक डोर पे पहुंचे कॉटेज के, जहाँ पे एक छोटी सी औरत केक बना रही थी, मतलब छोटी मतलब हाइट में छोटी औरत केक बना रही थी। वो अपने फायर प्लेस में अपनी केक्स बना रही थी। As Saint Peter had not eaten anything the entire day, he was very hungry and was feeling weak. So he went to the woman who was baking cakes and he asked for one cake out of the cake that she had baked. अब सेंट पीटर ने कुछ खाया नहीं था पूरे दिन, इसलिए उनको चक्कर जैसा आ रहा था और वीक फील कर रहे थे। तो उन वो वुमन के पास गए और उनको कहा कि मुझे सिर्फ एक केक दे दो इतनी सारी केक में से। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another, and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Now, seventh stanza. The woman was so selfish, she did not give cake from her store. Instead, she started making a really very small cake for Saint Peter. She did not want to share her things, but when she puts a cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to give to someone. अब वुमन बहुत सेल्फिश थी, उसने अपने स्टोर में से तो कोई केक नहीं दिया और इंस्टेड वो दूसरा केक बनाने लगी जो छोटा था। बट जब उसने बनाना स्टार्ट किया केक, तो उसको लगा ये केक भी बहुत बड़ा किसी को देने के लिए। The little miserable woman thought that the cake was too big to be given away, so she started making another small cake. When she looked at the cake, she again felt that it was as big as the previous one. Again, she was not ready to give the smaller cake to Saint Peter. अब ये मतलब ये वुमन बहुत कंजूस थी, तो उसने ये केक भी उसको बड़ा लग रहा था देने के लिए, तो उसने और एक केक बनाना स्टार्ट किया जो उससे भी छोटा था। और उसने अब जो केक बन गया और उसने देखा तो उसको लगा ये पहले केक जितना ही बड़ा था, तो उसने ये भी केक देने के लिए तैयार नहीं थी। Ninth, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it as thin as paper. But she could not part with that, for she said, "My cakes that seemed too small when I ate of them myself are yet too large to give away." So she put them on the shelf. The third time she took a very small amount of dough and rolled it. The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on fact that she rolled the dough and made it very thin like a wafer and baked it. But she was so greedy that she couldn't give that thin piece of bread to the saint. अब ये थर्ड टाइम था और उसने डो लिया एंड बहुत छोटा सा डो था और उसने इतना रोल किया कि वो एक वेफर जितना पतला हो गया और उसको बेक किया। बट वो इतनी लालची थी कि वो उसको इतना वेफर जितना छोटा सा केक भी उसको बहुत बड़ा लग रहा था देने के लिए। The woman reasoned that when she ate the cakes, she felt that they were very small, but if she had to give them to someone, she felt that they were too big to be given away. She put all the cakes on the shelf of her kitchen and she did not give any cake to Saint Peter. अब वुमन ने कहा कारण दिया ऐसा कि जब वो केक खाती थी तो उसको ये केक बहुत छोटा लगता था, बट अगर किसी को देना हो तो उसको ये केक बड़ा लग रहा था, तो उसने सब केक अपने शेल्फ पे रख दिया किचन के और सेंट पीटर को कुछ नहीं दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, "You are too far selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm." Saint Peter became angry. He was very hungry, he was feeling very weak, and the selfish woman was not ready to give him even a small cake. This behavior of greedy woman angered the saint.
अब सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत भूख लगी थी और बहुत वीक थे, और ये सेल्फिश इन औरत उनको देने के लिए रेडी नहीं थी एक छोटी सी केक। इस ग्रीडी नेचर की वजह से सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ गया। Saint Peter cursed the woman and said that she was very selfish. She did not deserve to live like a human being. He added that God had given her food, shelter, fire to keep her warm, but she had become so selfish for all the resources she had. She did not want to share them with anybody. अब सेंट पीटर ने औरत को श्राप दिया कि वो बहुत सेल्फिश है, उसको ह्यूमन बीइंग जैसे जीने का अधिकार ही नहीं है। उसने कहा कि गॉड ने उसको सब दिया है, फूड भी दिया है, शेल्टर भी दिया है और ऐसी जगह भी दी है जिससे वो गर्म रह सके, पर वो इतनी शेल्फिश हो चुकी है कि वो उनको इस चीजों को किसी के साथ शेयर करने के लिए रेडी ही नहीं है। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed into a bird. Saint Peter cursed the woman that hence she would become a bird, because she did not deserve the human form. She shall become a bird, and just like birds build their house by boring into the wood, and collect very little food by working hard the entire day. Similarly, she would also work hard in the dry wood all day and get little food and make a small place for herself to live in. अब सेंट पीटर ने वुमन को कर्ज दिया कि वो बर्ड बन जाएगी क्योंकि उसको इंसान बनने का कोई अधिकार नहीं था। वो एक बर्ड बन के बाकी बर्ड्स की तरह पूरे दिन मेहनत करके अपना घर बनाएगी। बर्ड्स पूरे दिन वुड में बोर करते रहते हैं, मतलब अंदर अपनी चोंच से खोदते रहते हैं और थोड़ा सा फूड कलेक्ट करते हैं वुड के अंदर से। वैसे ये लेडी को भी पूरे दिन मेहनत करके ड्राई वुड में अपना थोड़ा सा खाना ढूंढना पड़ेगा और अपने लिए घर रहने की जगह बनानी पड़ेगी। As soon as Saint Peter cursed the woman, she did not get a chance to speak for herself, because that very moment she flew up onto the roof through the chimney and flew out in the form of a bird. Saint Peter's curse had converted the woman into a bird. अब जैसे ही सेंट पीटर ने ऐसा कहा, औरत को खुद के लिए बोलने के लिए एक चांस भी नहीं मिला और वो चिमनी के थ्रू बाहर आ गई एक बर्ड बन के। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame, and every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for her food. When the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red colored cap on her head. This cap was there on the bird's head also, but the woman's remaining clothes had burned and turned black in color, just like coal. अब वुमन बर्ड में बदल चुकी थी। अब जब वो इंसान थी तब उसने एक कैप पहना था रेड कलर का। जब वो बर्ड बनी तब भी उसके माथे पे वो कैप था, बट उसके बाकी जो कपड़े थे वो जल गए थे कोल में, चिमनी में। Stanza 16. People who live in the countryside, even the small children who go to school, see this kind of bird in the woods. They see that she stays there all day and keeps digging the wood with her beak to collect her food. Whenever any child sees this kind of bird, then his elders tell him this story. अब जो लोग कंट्री साइड पर रहते थे या फिर जो बच्चे स्कूल भी जाते थे, उन्होंने ऐसा बर्ड देखा है जो पूरे दिन खोदता रहता है और अपना खाना रहना बनाता है। और जब भी ऐसा कोई भी बच्चा ऐसे बर्ड को देखता है, कभी भी विटनेस करता है, तो उनके एल्डर्स ये स्टोरी उनको सुनाते हैं। They say that the bird used to be a woman earlier. She was a very greedy, and so she was cursed to by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy. वो लोग कहते हैं कि ये बर्ड पहले एक औरत हुआ करती थी, पर वो बहुत ग्रीडी थी, तो उसको सेंट पीटर ने श्राप दिया और उसको एक बर्ड बना दिया। वो बच्चों को सिखाते थे कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये पोएट चैप्टर बहुत बड़ा है, दैट्स वाई इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी या फिर शॉर्ट्स क्रिएट कर दूंगी। If you like the video, please like, share and subscribe my channel and forward it to your friends. Thank you.